Assalamu alaikum guys. My name is Engineer Farhan Hanif and I'm from Department of Mechanical Engineering, Bahauddin Zikri University, Multan. Today I want to talk about outcome-based education and how it is implemented in different engineering programs. Well, accreditation is a quality assurance review process to determine if educational programs meet certain criteria standards of quality or not. It is done by a peer review boards whose members include faculties from different accredited universities. Accreditation is done normally by an external bodies just as Washington Accord, ABET, Sydney Accords, Pakistan Engineering Councils, Dublin Accord, etc. Accreditation of academic programs recognizes and acknowledges the value of transforming a student into a capable engineer with sound knowledge and acceptable level of professional skill. Main objectives are that the graduate should acquire a required set of attributes of national and international standards and required a mechanism of continual improvement of the program through evaluation and feedback. Well, what is Washington Accords? It is often being considered because Pakistan Engineering Council also follows the Washington Accords now, and the OBE-based engineering is dependent upon this. Well, it's an international agreement between signatory countries, accreditation bodies, to be for the engineering degrees. If we are following the Washington Accords, then any of the signatory countries are recognized by the other signatory countries as having met the academic requirements for entry to the practice of engineering. It was established in 1989 and for only undergraduate engineering degrees under outcome-based education system. That's why we want to implement OBE. There are 22 signatory countries now, including Costa Rica in 2020. Whether Pakistan made is full member or first signatory in 2017. Well, why we need accreditation? International mobility. That's the main concern why we need Washington Accords. Washington Accord states that the graduates are recognized by other signatory countries and possible employments as engineers in those countries without further examination. So in these 22 countries, wherever our engineer will go, he will be equivalent to the engineers program in their country, in other countries like Canada, Australia. Well, PEC, Pakistan Engineering Council accreditation criteria says that there are 9 criterions we have to follow in order to get accreditation. The first one is PEOs, Program Educational Objectives, PLOs, Curriculums and Learning Process, Students, Faculty and Support Staff, Facilities and Infrastructure, Institutional Support and Financial Resources, Continuous Quality Improvement and Industrial Linkages. These 9 complete the cycle. This is in the center there are PEOs and PLOs. We want to attain that. Then curriculum, students, faculty, facilities. So there are total 9 criterias. Whether the eighth one, the continuous quality improvements bind them together. It is a process. It's a cyclic process. It's a never-ending process. So we have to continuously improve the quality of the system What is OBE? Normal now, what we are teaching in Bahauddin Zakir University is an input-based system, quantitative assessment, and continuous quality implementation is not important now. But we want to do is OBE is an educational process, outcome-based assessment, direct focus on achieving certain specified outcomes in terms of individual students' learning, and strong emphasis on CQI. OBE is an educational process. It's focused at achieving certain specified outcomes in terms of individual student learning. मतलब हम students को समझाना individual level पे train करना चाह रहे हैं. Key things, outcomes क्या होते हैं? Key things students should understand and be able to do all the qualities they should develop. Both structure and curricula are designed to achieve these capabilities or qualities. Education structures and curriculums are regarded as means, not end. Means they are open-ended, they are always changing. If they do not do the job, they are rethought. अगर उनका काम सही नहीं हो रहा, then through continuous quality improvement (CQI), they have to rebuild and rethought. OBE addresses the following key questions. What do we want the students to have or to be able to do? कि हम क्या चाहते हैं कि students के पास क्या हो और वो क्या कर सकते हो?
How can we best help students achieve it? How will we know whether the students have achieved it? And how do we close the loop for further improvements? CQI means it should be cyclic. So it is not what we teach, it's what students learn. What are expected of students under OBE? Students are expected to able to do more challenging tasks, able to write project proposals, complete projects, analyze case studies, give case presentations, showcase their ability to think, question research, be more creative and synthesize observation, able to plan and recognize tasks, able to work in a team, and many more. Benefits क्या हैं OBE के? The more directed and coherent curriculum, graduates will be more relevant to industry or stakeholders, and continuous quality improvement is in place. What is CQI? Well, the first thing is say what you do, then do what you say, prove it, and then in the end, improve it. वेल अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डोमेन के कंपैरिजन की तो इंजीनियर्स का जो वर्क होता है इट इज़ रिसर्च एंड डिज़ाइन while that of technologists it's supervision and maintenance. इसी लिहाज से उनकी एजुकेशन होती है इंजीनियर्स जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग साइंसेज में प्रोफेशनल कोर्सेज में थ्योरेटिकल बेसिकली while technologists are basically practical and they have appropriate math and engineering science knowledge. Same division apply to their engineering breadth and correct curriculum एंड टेक्नोलॉजी की जो ब्रेथ होती है और डेप्थ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है इंजीनियर्स से. सो इसी बात को आगे लेके चलते हैं. जब एंट्री होती है इंजीनियरिंग एजुकेशन की वो मैथमेटिक्स बेस्ड होती है और उनकी जो ब्रेड्थ एंड करिकुलम की जो ब्रेड्थ होती है उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा होता है, इंजीनियरिंग साइंस का होता है, प्रोफेशनल एंड की स्किल्स होते हैं. सो बेसिकली द डिलीवरी ऑफ थ्योरी इज 80 to 90% while of practical is 10 to 20%. बट ऑन द अदर हैंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट मैथमेटिक डोमेन्स जो होती हैं वो कम होती हैं, उनकी ब्रेड्थ होती है कम होती है. सेम डेप्थ का भी इशू है मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग साइंसेज का. प्रोफेशनलिज्म सेम एंड की स्किल सेम. उनका कोर्स करिकुलम के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल हाफ ऑफ पोर्शन में होता है. सो बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंजीनियर इज much more than of a technologist. So when we are designing an engineering domain, the engineering program curriculum, we have to take basically three skills in our hand. That is cognitive, psychomotor, affective. Where cognitive and जो हमारे पास affective skill होती है वो हमारे पास education के अंदर आ जाती है और जो psychomotor skill है वो training के अंदर आती है. हमें तीन चीजों के अंदर इसे deal करना है. Outcome based engineering education और engineering में सबसे पहले चीज़ होती है प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि अचीव होते हैं 3 से 5 साल के आफ्टर योर प्रोग्राम्स. देन इट इज़ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जो कि एग्जिट पे एग्जिट होते हैं, यानी जब 4 साल कोई भी ग्रेजुएट कंप्लीट करता है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर देन वी कैन टॉक अबाउट प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स. ये स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे बता सकते हैं कि ये हमने अचीव किए हैं या नहीं किए. कोर्स या यूनिट लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड के ऊपर, KSA एज वी से दैट. और इसमें हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्स होते हैं, सेंटर्ड होते हैं ये. और इसको हम डिलीवरी चाहे हम केस डिलीवरी करें या प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करें उससे हम पता लगा सकते हैं. सो जो पहले दो हैं वो भी मेजरेबल हैं बट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो प्रोसेसेस हैं और परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं हमारे. जो नीचे वाले हैं जैसे कोर्स लर्निंग आउटकम इनकी असेसमेंट टीचर्स करते हैं डिफरेंट सिनेरियो से. टोटली ये कवर करती है हमारी इवैल्यूएशन को और इवैल्यूएशन के बाद हम कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं. सो दिस होल प्रोसेस इज रिलेट्स टू डायरेक्ट एंड कोहेरेंट करिकुलम इंडस्ट्री वाइज एंड ग्रेजुएट रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री हमारे पास आते हैं. दिस इज अ होल अकाउंटेबल प्रोसेस. सो अगर हम बात करते हैं एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल तो वो कुछ चीज़ें चेक करते हैं जिनमें से सबसे पहले हमारे पास विजन एंड मिशन होना चाहिए इंस्टीट्यूट्स का. उसके बाद विजन और मिशन डिपार्टमेंट का अपना होना चाहिए. प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन 3 to 5 years के बाद हमें मिलते हैं वो. प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जो कि अपॉन ग्रेजुएशन हमें मिलते हैं. एंड
क्लास लर्निंग आउटकम्स, जो कि हमारे पास कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज के ऊपर होते हैं, और जो नीचे वाले तीन हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। विजन और मिशन क्या होता है? विजन इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स दैट एन इंस्टीट्यूट वुड लाइक टू अचीव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेयर मिशन इज द मीन बाय विच इट परपोजेस टू मूव टूवर्ड्स द स्टेटेड विजन। मतलब जो आप बात कर रहे हैं विजन में, उसे आपने कैसे अचीव करना है। So Bahauddin Zakriya University, as we are affiliated with it, and we are part of it. So the vision of BZU says that the university is expected to be immensely innovative in fostering world-class research and becoming a vital agent for the regional development. And how they can achieve it? We aspire to be innovative in fostering world excellence in diverse academic disciplines, developing into a vital player, gathering knowledge and conducting research to benefit people of Pakistan in particular, regional country in general, and world at large. So this is the mission statement of BZU. Talking about the Department of Mechanical Engineering, as we are a part of BZU, the Department of Mechanical Engineering is expected to develop students to be immensely innovative in research and become vital for the development of country of the region. The Department of Mechanical Engineering aspires to develop its students to be innovative and productive engineers of the country, region, and the world. So that is our vision and mission. Well, what is program educational objectives? Broad statements होती हैं ये, what graduates are expected to achieve after a few years of bachelor engineering, linked to program learning outcomes, and it includes feedback from employers, alumni, academics, and other stakeholders. Basically, जो last line है CQI. Program educational outcomes, limit number of statements होते हैं, manageable होते हैं, no restatement of outcomes, ये आप बार बार write नहीं कर सकते, forward looking and challenging होते हैं ये, and distinctive unique features having own niche, इनकी अपनी value होती है, they are smart, measurable, achievable, result oriented, and having a time frame, basically they are smart. So what are the program educational outcomes of mechanical engineering departments? The first one is to equip the students with the knowledge of mathematics and mechanical engineering, essential for solving problem and for the product development related to the field of mechanical engineering. To make students able to generate ideas and work on theory to solve problems both individually as a man and as a member of team. To equip students with the knowledge of research and development related to the mechanical engineering. To impart students with ethical norms and social values. So these are four program educational objectives जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम डेवलप करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो 3 से 5 साल के बाद हम मेजर कर सकते हैं. सो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हम अपने प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को असेस कैसे करते हैं, वेदर इवेलुएट कैसे करते हैं. तो इसकी डायरेक्ट असेसमेंट कोई नहीं है, इसकी इनडायरेक्ट असेसमेंट होती है. मीन्स सबसे पहले हमारे पास इसके लिए एलुमिनाई सर्वे फॉर्म्स हैं, एम्प्लॉयर सर्वे फॉर्म्स हैं, जो कि हमारी बीवीयू की वेबसाइट पर मैकेनिकल के सेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं. इनकी जो समरी आती है फिर हम उसे रिव्यू करते हैं क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल और इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड से, और फिर वो रिव्यू की जाती है कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट सेल से, और हम फिर एक्शन डिसाइड करते हैं एंड देन अपडेट करते हैं करिकुलम का, या और भी जो हमारे पास फर्दर एक्शंस होंगे वो हम करते हैं, फिर उन एक्शंस को अप्रूव करवाते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी से, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है. सो व्हाट आर नाउ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स? What the graduates are expected to know and able to perform or attain by the time of graduation, skill, knowledge and behavior, attitude. यानी ये वो जो 3 खसूसियात की हम बात कर रहे थे, KSA एट द एंड ऑफ 4 years, उनमें से कितने इनके पास आई हैं स्टूडेंट्स के पास, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उनके लिए हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं. There must be a clear linkage between program educational objectives and program learning outcomes. जो हमारे प्रोग्राम 4 PEOs थे वो प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम से जो है वो लिंक होने चाहिए. Need to distribute the outcomes through the program. हमें पूरे प्रोग्राम यानी जो हमारे 48 कोर्सेज या 50 कोर्सेज हैं उनके ऊपर PLOs को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये नहीं कि 1 या 2 कोर्सेज सिर्फ एड्रेस कर रहे हो. करिकुलम मॉडल्स के अंदर हमारे पास 4 सालों में हम कोई भी मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं. नॉलेज हमारे पास 70% 30% की रेशो रहनी चाहिए, लेकिन कभी हम इनिशियल ईयर्स के अंदर हम लेस स्किल एंड एटीट्यूड कर सकते हैं और फाइनल ईयर्स में ज़्यादा. कभी हम इनिशियल में ऐसे ज़्यादा कर सकते हैं और फाइनल्स में कम, और कभी हमारे पास मिड में कम हो सकता है. सो डिपेंड करता है कि हम इनमें से कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं.
So normally in engineering, in BZU mechanical department, we follow the model uh, A or slightly B. That's the thing. Mix up है हमारे पास. सो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो एक्चुअली में वाशिंगटन अकॉर्ड्स के एट्रीब्यूट्स हैं जो वो चाहते हैं कि 12 एट्रीब्यूट्स किसी भी इंजीनियरिंग में किसी भी मुल्क के जो 12 बाई सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनमें होने चाहिए तो उनमें 12 हैं वो तो वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन तो दीज आर कॉल्ड पीएलओस इनमें जो ग्रीन और रेड हैं ये कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो भी किसी कोर्स में होंगी उसको डिफाइन कर रहे हैं सो पहला हमारे पास है नॉलेज कि हमें अप्लाई इंजीनियरिंग जो हो एबल हो अप्लाई नॉलेज of maths, natural sciences, engineering fundamentals. The second one says that they could identify, formulate, research, literature, and analyze complex engineering problems. The third one says that they should be able to design solution for complex engineering problems and systems. ठीक है? And that the system they design must meet the specified needs of public health, safety, cultural, societal, and environmental consideration. The fourth one says that could investigate complex problems. ब्रेड्थ एंड डेप्थ उनको इतनी ज़्यादा आनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ कि दे कुड conduct investigation about the problems. The fifth one say that they can use the model tools that can create, select and apply appropriate techniques, resources and modern engineering and IT tools. The sixth one says that the engineer and the society is the main concern here, that they should apply reasoning informed by contextual knowledge to assess society, health, safety, legal, and cultural issues. The seventh one focuses on environment and sustainability, that understand and evaluate the sustainability and impact of professional engineering work in the solution of complex engineering problems in society and environmental contexts. The eighth one is ethics that apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of engineering practices. Ninth says that individual and teamwork function effectively as an individual and as a member of leader in diverse teams and in multidisciplinary settings. The tenth says that communication, the level of communication according to the types of activity performed, that they should comprehend, write, and make effective presentation and receive clear instructions. 11th says that project management and financial skills are important. Demonstrate knowledge and understanding of engineering and management principle and economic decision making. The 12 is the main. Last one is the important one, the lifelong learning. That recognize the need for have the preparation and ability to engage in independent and lifelong learning in the broadcast context of the technological change. So how do we evaluate these PLOs? इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं एक हमारे पास डायरेक्ट असेसमेंट है और एक इनडायरेक्ट असेसमेंट है इनडायरेक्ट असेसमेंट में हमारे पास इवैल्यूएशन फॉर्म्स हैं जो कि फैकल्टी भी कोर्स की इवैल्यूएशंस कर सकती है टीचर्स की इवैल्यूएशंस जो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और उसके अलावा एग्ज़ाम और क्विज़ेस हैं जो कि हम ले रहे होते हैं डायरेक्ट असेसमेंट स्टूडेंट्स के साथ हर कोर्स के और वो जो कोर्सेज हैं वो PLO से मैप होंगे उसके बाद हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजर करते हैं देन रिव्यू होता है डी की इसी तरह हम इफेक्टिव मेजर्स और अपडेट करते हैं करिकुलम की जो भी चीजें हमें अपडेट करनी है स्टैट्यूटरी बॉडी से इंप्रूव अप्रूव करवा के ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है सो दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट the last thing comes in this cycle is post learning outcomes वो क्या होते हैं they address the ability to be attained by students upon the completion of a single subject कि हर सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया एक सब्जेक्ट के कुछ यानी काफ़ी COs हो सकते हैं नॉर्मली 2 से 4 आइडियल हैं ठीक है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके लिए हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं ताकि हम इनको लिख सकें Our blue taxonomy says that remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. इसको हम ज़्यादा explain करेंगे when we are writing CLOs in the next presentation. So जो concept है outcome based education का वो है कि हमने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं जो कि जिसके लिए हमारा स्कूल विजन और मिशन इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स है EAC की ABET की फैकल्टीज़ की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं PEC की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ये दोनों क्या हैं आपस में लिंक हैं
इसके बाद हमने करिकुलम स्ट्रक्चर बनाना है जो कि पीएलओ उसको लिंक कर रहा होगा। उसके साथ हमने कोर्स लर्निंग आउटकम्स और कोर्स आउटकम्स बनाने हैं। ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और इसको पूरे को हमने असेस करना है, इवेल्युएट करना है, ताकि हम सीक्यूआई को इम्प्लीमेंट कर सकें। मॉडल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 मॉडल्स में से हम कोई भी इम्प्लीमेंट। एजुकेशनल प्रोसेस में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले तो प्रोग्राम एजुकेशन आउटकम्स हमारे पास हैं। उसके लिए हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में पोटेंशियल एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, एलुमनाई, रेगुलेटिंग बॉडीज, ये हमारे हैं। इसके बाद आते हैं कोर्स आउटकम या कंटेंट डेवलपमेंट हमारे। इसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स टीचर्स हैं, जबकि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्री, एलुमनाई वगैरह हैं। कोर्स इम्प्लीमेंटेशन में इसके बाद आती है जो कि हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, टेक्नीशियन, स्टूडेंट्स, ये तीनों हेल्प करते हैं किसी भी कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और कोर्स को असेस इंटरनल स्टेक होल्डर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स करते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट्स को असेस कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स कोर्स और टीचर्स के बारे में फीडबैक दे रहे होते हैं। देन ओवरऑल जो होती है हमारे पास प्रोग्राम एवेल्युएशन है, ठीक है, जिसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, एलुमनाई, रेगुलेटिंग बॉडी है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये हमारे पास एक साइकिल सा है, जिसके अंदर जो ऊपर वाले दो हैं दे आर स्पेसिफिक, द मिड वन आर फॉर्मेटिव और समरेटिव, ये समरी होते हैं। और लास्ट जो होते हैं वो हमारे पास समरेटिव हैं। ठीक है, ये जो सर्वेज हमारे पास इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सर्वेज आ रहे हैं। सो दिस इज द पुल फैक्टर हाउ वी हैव टू build our educational process. So what should be the role of lecturers or teachers in implementing this process? So they should review PEOs, program learning outcomes, course structures and syllabi, teach the relevant engineering, maths and other relevant subject, conduct relevant tutorials and laboratory practical sessions, give appropriate guide on assignments and project, conduct empirical measurements of PLOs, that's important, prepare the required documentation, assure that PEC, EAC and public on the standards of our graduates, that हमें ये preach भी करना है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Obtain and maintain accreditation from PEC, EAC through continuous quality improvement. सर स्टूडेंट्स के भी कुछ रोल हैं जिसमें हमारे पास आते हैं. दे शुड रिक्वायर नो द रिक्वायर्ड पीईओज एंड पीएलओज जो कि बीजीयू की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. ईच कोर्स पे उनके उन्हें लर्निंग आउटकम्स यानी सीएलओज पता होने चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए कि वो उस कोर्स के बाद कितनी नॉलेज, स्किल या एबिलिटी जो होगी उनके पास होगी. ये भी हमारा कोर्स करिकुलम बीजीयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है. बी मोर प्रोक्रिएटिव इन लर्निंग प्रोसेस टू एक्वायर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द सब्जेक्ट. उन्हें भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए ताकि वो लर्न कर सकें. एंड दे हैव टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग evaluations and dialogue sessions and with deans and other. So basically it's a complete process जिसके अंदर हमारे हर बंदा इन्वॉल्व है. 5 चीज़ें हमारे पास हैं: मिशन एंड विजन जो कि इंस्टीट्यूट का है, उसे अचीव करने के लिए हम डिपार्टमेंटल मिशन एंड मिशन को भी फॉलो करते हैं, जो कि अचीव होता है प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स से, जो कि 12 हैं. और वो जो पीएलओज हैं वो अचीव होते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम से, जो कि हमने हर सब्जेक्ट के डिफरेंट बनाने हैं. सो दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो कि हम इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स. दैट्स ऑल फॉर. थैंक यू.